हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश एग्ज़ाम पेपर ENG 103 की, जो 29 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ था, जिसका पेपर कोड है 0136। इस बार भी एग्ज़ाम इसी टाइप का होना है। पेपर को आंसर्स के साथ अपलोड किया जा रहा है, जिसे 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन हु कंडम्स स्टडी। चार ऑप्शन है, सिंपल मैन, क्राफ्टी मैन, वाइज मैन, विट्टी मैन। द करेक्ट आंसर इज बी, क्राफ्टी मैन। What quality of the schoolman does Bacon refers to in of studies? Their oratorical skills, their hair splitting, their knowledge, their language. The correct answer is B, their hair splitting. Dream Children was published in 1820, 1821, 1822, 1823. The correct answer is C, 1822. Charles Lamb's Dream Children can best be described as professional essay, personal essay, formal essay, argumentative essay. The correct answer is B, personal essay. Virginia Woolf is categorized as an author of which century? 18th century, 19th century, 20th century, 21st century. The correct answer is C, 20th century. Which of these authors is called the Prince of English Essayists? Francis Bacon, Charles Lamb, Joseph Addison, Oliver Goldsmith. The correct answer is B, Charles Lamb. What does Oliver Goldsmith consider himself and advises his readers to be? A citizen of the world, a citizen of England, a citizen of Europe, a citizen of the West. The correct answer is a citizen of the world. According to Bacon, who uses studies? Crafty man, simple man, wise man, ambitious man. The correct answer is C, wise man. The aim of reading should be to contradict and confute, to believe and take for granted, to find, talk and discourse, to weigh and consider. The correct answer is D, to weigh and consider. Next question है, what makes an exact man according to Bacon? Reading, writing, conference, practice. The correct answer is B, writing. Lamb's grandmother died of cancer, old age, pneumonia, COVID. The correct answer is A, cancer. Charles Lamb's pen name was Charlie, Elia, Alice, Alpha. The correct answer is B, Elia. The essay on national prejudices is written by Francis Bacon, Charles Lamb, Oliver Goldsmith, Virginia Woolf. The correct answer is C, Oliver Goldsmith. Professions for Women by Virginia Woolf is a documentary, a memoir, an address to working women, a travelogue. The correct answer is a documentary. Next question है, according to Virginia Woolf, which is the easiest profession for women? Cooking, writing, painting, singing. The correct answer is B, writing. How much money did Virginia Woolf earn for her first published work? 10 shillings and 6 pence, 10 pounds and 6 pence, 10 shillings and 10 pence,
10 pence. The correct answer is A, 10 shillings and 6 pence. Next question है, what did Virginia Woolf do with her first earnings? She bought a dress, she bought pen and paper, she bought a Persian cat, she invested it is a bank. The correct answer is C, she bought a Persian cat. पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इज रिटन बाई, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, जोसेफ एडिसन. द करेक्ट आंसर इज बी, एपीजे अब्दुल कलाम. टैगोर एंड हिज इंडिया इज रिटन बाई अरुंधति रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, महात्मा गांधी. द करेक्ट आंसर इज सी, अमर्त्य सेन. Periodical essays originated in 16th century, 17th century, 18th century, 19th century. The correct answer is C, 18th century. What is PowerPoint presentation? Display of power, PowerPoints in electrical fittings, a Microsoft Office application, power politics. The correct answer is C, a Microsoft Office application. What was the name of Charles Lamb's grandmother in Dream Children? Field, Alice, Mary, Uvian. The correct answer is A, Field. Men with national prejudices are called dash by Oliver Goldsmith. Pseudo patriots, genuine patriots, true patriots, second grade patriots. The correct answer is A, pseudo patriot. Who said Bacon is the wisest, brightest and meanest of mankind? John Dryden, Alexander Pope, Dr. Johnson, Ben Jonson. The correct answer is B, Alexander Pope. Bacon says to spend too much time on studies is dash sloth, affectation, labor. तो इसका सही आंसर है ए, sloth. According to Bacon, histories make men dash dull, wise, moral, subtle. तो करेक्ट आंसर है बी, wise. Charles Lamb belongs to dash century, 17th, 18th, 19th, 20. The correct answer is B, 18th. Aphorism is short, pithy and thoughtful sentences with practical wisdom, disjointed and loose order of sentences, long, tedious and unorganized sentences, none of the above. Correct answer is A, short, pithy and thoughtful sentences with practical wisdom. How many imaginary children did Charles Lamb have in Dream Children? 1, 2, 3, 4. The correct answer is B, 2. Oliver Goldsmith was an A, Irish, Englishman, French, Spanish. The correct answer is A, Irish. What is the subtitle of Charles Lamb's Dream Children? A memoir, a travelogue, a reflection, a reverie. तो इसका सही आंसर है डी, ए reverie. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज नन एज ए फेमिनिस्ट क्रिटिक? फ्रांसिस बेकन, चार्ल्स लैम्ब, वर्जीनिया वुल्फ, अमर्त्य सेन. तो करेक्ट आंसर है इसका सी, वर्जीनिया वुल्फ. हु इज नन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? जगदीश बोस, रामानुजन, एपीजे अब्दुल कलाम, आर्यभट्ट. तो इसका करेक्ट आंसर है सी, एपीजे अब्दुल कलाम. What is the main theme subject of Abdul Kalam's ignited minds? His dream of developed India,
हिज ड्रीम ऑफ टेक्नोलॉजिकल वॉर अगेंस्ट यूएसए, हिज लव लाइफ, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ए, हिज ड्रीम ऑफ डेवलप्ड इंडिया। पर्सनल लेटर्स रिटन टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली आर फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, इमोशनल लेटर, लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो इसका सही आंसर है ए, फॉर्मल लेटर्स। व्हाट इज ब्लॉग? ए कॉमर्शियल वेबसाइट, ए सोशल मीडिया वेबसाइट और वेब पेज regularly updated by an individual or a small group about personal opinions or experiences, content writing, email। तो इसका सही आंसर है बी, ए सोशल मीडिया वेबसाइट और वेब पेज रेगुलरली अपडेटेड बाई एन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप अबाउट पर्सनल ओपिनियंस और एक्सपीरियंसेस। अमर्त्य सेन won the Nobel Prize in 1995, 1998, 2000, 2005। तो इसका सही आंसर है बी, 1998। Resume, CV writing is also known as a biodata, a travel story, a short novel, an essay। तो इसका सही आंसर है ए, बायोडाटा। ओलिवर गोल्डस्मिथ बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी, 17th, 18th, 19th, 20th। तो इसका सही आंसर है बी, 18th। और ये लास्ट क्वेश्चन है, द स्पेक्टेटर इज ए पीरियोडिकल, पोयम, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल। तो इसका सही आंसर है ए, पीरियोडिकल। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।